Assalamu alaikum and welcome to a very important video. Today's lesson is very important because today we are going to start the passive of should in past. Should we use in present and should we also use in past? So today we are going to convert active sentences into passive, but the point is the modal verb is should in past. Should in present we use and should in past we use. So today should in past passive we are going to start. यानी आज जो should के past के sentences होते हैं उनको हम passive में convert करेंगे. और वो किस तरह convert होंगे? थर्ड फॉर्म लगेगा, बी लगेगा या नहीं लगेगा, बीन लगेगा या नहीं लगेगा. तो आज का हमारा टॉपिक है should in past convert into passive. So let's start. Now the formula is in front of you. Object should have been. अब यहां पर हमने be नहीं लगाना बल्कि should have been लगाना है क्योंकि बात हो रही है past की. should present में जब हम passive बनाते हैं तो should be के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब बात हो रही हो past की तो यहां पर हम यूज करेंगे should have been. तो एक दफा फिर बता दो. ऑब्जेक्ट should have been, third form by personal pronoun and remaining part of sentence. If the sentence is negative, अगर जुमला नेगेटिव हो तो should के बाद हमने not लगा देना है. should not have been, should not have been, third form by personal pronoun and remaining part of sentence. प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं should की तो वहां पर हम should be लगाते हैं, लेकिन जब पास्ट की बात हो तो should have been हो जाएगा. तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ. You should have taken the class. Now this is past example. ये जो एक्टिव का जुमला है ये भी पास्ट में है और इसका जो पैसिव बनेगा वो भी पास्ट में होगा, लेकिन ये किस चीज का पास्ट है? should का. You should have taken the class. अब इसे हमने पास्ट में ले जाना है. The class should have been taken by you. और अगर जुमला नेगेटिव होता तो should के बाद हम not लगा देते. The class should not, यहां पर हम not लगा देंगे और फिर उसके बाद है the class should not have been taken by you. Next example. They should have informed us. उनको हमें इतला कर देनी चाहिए थी, दे देनी चाहिए थी. This is past active और इसका पैसिव कैसे बनेगा? We should have been informed by them. So this is the passive sentence of should in past. और अगर जुमला नेगेटिव होता तो once again should के बाद आपने not लगा देना है. We should not, यहां पे not लग जाएगा और बाकी जुमला सेम रहेगा. We should not have been informed by them. Now the next example is he should have watched my video. अब ये पास्ट का जुमला है लेकिन एक्टिव में है और हमने इसे ले जाना है पैसिव में. My video should have been watched by him. अगर जुमला नेगेटिव होता तो once again should के बाद आपने not लगा देना. My video should not have been watched by him. Next example. You should not have teased him. You should not have teased him. पास्ट का जुमला और किस में है? should में. He should not have been teased by you. So this is the sequence, this is the formula and this is the structure of should in past passive. You should have helped me. I should have been helped by you. They should have done work. The work should have been done by them. Ali should have cleaned my room. My room should have been cleaned by Ali. She should have made a cup of tea. A cup of tea should have been made by her. Bilal should have taken the class. The class should have been
taken by Bilal. Amjad should have used this mobile phone. This mobile phone should have been used by Amjad. You should not have deceived him. He should not have been deceived by you. So, viewers, this is today's topic, should in past passive. मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं और जो वर्ड्स यूज करूं वो भी सिंपल यूज करूं ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ सके. सो दिस इज टुडेज टॉपिक जिसमें हमने शुड को पैसिव में पास्ट में कन्वर्ट किया. यानी एक तो ये शुड पास्ट है और उसे हमने पैसिव में कन्वर्ट किया. फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ द नेक्स्ट वीडियो लेट्स सी कि उसमें हम कौन सा पैसिव पढ़ते हैं. सी यू इंशाल्लाह. वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज.